Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिकरवार। दीपशिखा जी नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Retail inflation eases to 5.66% in March this year, mainly due to a fall in food and fuel prices. Industrial output rises 5.6% in February. Key domestic stocks log gains for the 8th session in a row. Sensex closes near 60,400 points. Nifty settles above 17,800 level. And TCS announces a net profit of 11,392 crore rupees for the fourth quarter of 2022-23 fiscal. देश में मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन पदार्थों का मूल्य कम होने से इस वर्ष मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 5.66% पर आई। देश में इस वर्ष फरवरी महीने में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 5.6% पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 8वें सत्र में देखी गई तेजी। सेंसेक्स 60,400 के नजदीक हुआ बंद। निफ्टी 17,800 के स्तर से ऊपर पहुंचा और टीसीएस ने वर्ष 2022-2023 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ बढ़कर 11,392 करोड़ रुपए पर पहुंचने की घोषणा की। In our top story, retail inflation based on the Consumer Price Index (CPI) eased to 5.66% in March this year. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, inflation dropped to a 15-month low in March, mainly due to ease in the food and fuel basket. Consumer Food Price Index (CFPI) fell to 4.79% as compared to 5.95% in the previous month. The rural inflation in March stood at 5.51%, while urban inflation was at 5.89%. Retail inflation stood at 6.95% in March the previous year. The government had mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. Dipshika, how would you look at these figures of 5.66% for March for retail inflation? Is it within the target set by the Reserve Bank, even though the story says 4% with a plus of 2% on the upside? Definitely it is inching towards that, and I'm sure it will give a lot of comfort to the central bank, which we know paused on the interest rate hikes. And if, monsoon doesn't play truant, hopefully, this pause will continue and one can look at reduction, beginning of reduction in a few months from now. And definitely, this is showing the impact of the interest rate increases which the RBI has done, and also improvement on the supply side, which has led to easing. So when you say supply side, for instance, our crude purchases from Russia, and what we saw a reduction in global crude oil prices, which are now inching up again because demand is rising. That is as far as the fuel supply is concerned. What about food supply? You mentioned about monsoons being successful as well. But with climate change, how do you see this as something that the RBI can rely on? So, we had two forecasts on the monsoon. A private forecaster has said it may be below normal. The IMD has a different version. So we have to see how monsoon really plays out, but going by what IMD has said, it would be a likely normal monsoon. On the supply side, it's not just the crude prices. We've seen some easing there. The vegetable fruit prices have also sort of begun to play on the overall easing.
although edible oils also. On the cereal side, there is a bit of stress there, but guess, if the monsoon remains as such, the pressure is likely to ease. यहाँ पर हम दीपशिखा जी ये समझना चाहेंगे कि ये आंकड़े कुल मिलाकर संतोष की दिशा में हमें बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि मुद्रास्फीति की दर थोड़ी और नरम पड़ती रहेगी आने वाले दिनों में, या फिर से इसके ऊपर उठने के और भड़कने के आसार दिख रहे वैश्विक परिस्थितियों को और आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, एक और जो मुद्रास्फीति के ऊपर असर आएगा वो है बेस इफेक्ट का। आपको अगर याद होगा, पिछले वर्ष जो है मुद्रास्फीति की दर जो है बढ़ना शुरू हो गई थी, तो एक वो असर जो है डेटा के ऊपर रहेगा, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जहां तक मूल्य की दर कम होने का सवाल है, हम देख रहे हैं कि जो ज्यादातर चीजें जिनमें बढ़ोतरी दिखाई दी थी, अब उनमें थोड़ा सा असर दिख रहा है कि वो कम हो रहे हैं। और चूंकि वैश्विक परिस्थिति भी ऐसी बनी है कि अब थोड़ा सा जो प्रेशर है, हम देख रहे हैं कि दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी ईजिंग की बात कर रहे हैं। वहां पे किस तरह का डेटा आता है और उस पर निर्भर करेगा, लेकिन ऐसी बातचीत चल रही है कि अब उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी ब्याज दरों में, और इन्फ्लेशन को जो चीजें फीड कर रही थी उनमें खासतौर से क्रूड प्राइसेस जो थे, तो वो भी नॉर्मल स्तर पे रहने की आशा है। तो जो हम देख रहे हैं, ये जो आंकड़े आज आए हैं, ये इसी दिशा में शायद चलेंगे आगे। Well, let's have a look at industrial output now. Industrial output of the country in February 2023 rose by 5.6% on a year-on-year basis. As per the data from the Ministry of Statistics released today, the index of industrial production IIP expanded as manufacturing sector's output increased 5.3% in February and mining output rose by 4.6%. Power generation surged 8.2% during the month under review. For the month of January this year, IIP growth was revised to 5.55% from 5.2%. IIP grew 1.2% in February last year. IIP has gone up. What were the reasons behind this rise? We are definitely seeing, the manufacturing sector is now sort of, the recovery seems to be sort of spreading in the sector, which is showing in the data. A number of sectors have shown improvement. Mining output, power generation has surged. Power generation also shows that consumption is increasing in the manufacturing sector. The only concern is on the consumer durable side. FMCG side also there was some kind of concern building up there. So that also seemed to be addressing. Now, biggest factor which seems to be helping a number of sectors here is large government spending on infrastructure and capital expenditure, which is helping some of these sectors, especially metallic sectors, mineral sectors, which is showing in the data. यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे फिर से कि ये जो कुल मिला के आंकड़े हैं, उसमें विनिर्माण क्षेत्र क्या, जो हमारा कोविड से पहले के जो तेज गति से हम विकास कर रहे थे, उस दिशा में जाने की पुष्टि अब हो रही है इन आंकड़ों से? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जो रिकवरी हमने देखना शुरू किया था, जो कोविड के बाद हमें नजर आई थी, वो और स्ट्रांग, मजबूत होती दिखाई दे रही है। और अगर हम आंकड़े और भी देखें, अगर आप ऑटोमोबाइल के आंकड़े देखें या और सर्विसेज सेक्टर के कंजम्पशन का डेटा देखें, तो वो भी ये दिखाता है कि रिकवरी जो है थोड़ी और मजबूत हो रही है। हालांकि चूंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी और ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन होगा इस साल में, लेकिन इंडस्ट्रियल रिकवरी में ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक बेहतर हो रही हैं। What's your take on the GDP growth forecast of the IMF? They have revised it to 5.9% for this financial year 2023 to 24. See, it's in line with the all other projections. Everyone expects the growth to moderate in the current financial year, obviously because of the, measures by the central bank. There has been an increase in interest rates. The overall global economy is not offering that kind of support
will not offer that kind of support to Indian economy as well. So that moderation would be felt. Export sector would feel some pressure because advanced economies are under pressure. So that impact will show in the economy. But overall, if you look at, some of the fast-moving indicators that we are seeing, passenger vehicle sales, PMI, they've all been very strong. So it does sort of show that we may not be possibly hit. There could be just mild moderation. दीपशिखा जी, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर खास तौर से ध्यान आकृष्ट किया है कि वहां हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं. वहां पर एक यदि हम बड़े पैमाने पर देखें तो जो हाई एंड जो कह लें कि गाड़ियां हैं, अपेक्षाकृत हम उनमें बिक्री अपेक्षाकृत अधिक देखते हैं. इसी तरह जो मकान कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, हम रियल्टी सेक्टर में देखते हैं कि जो हाई एंड हैं वहां पर तो बढ़त बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं जो सामान्य छोटी गाड़ियां बिका करती थी, या कह लें कि जो दोपहिया वाहन हैं, उनमें हम बहुत तेज बढ़त देखते थे. वहां क्या स्थिति है और वो आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, दोपहिया वाहन और उसमें ज्यादातर जो सेल होता था या डिमांड आती थी वो रूरल सेक्टर से आती थी, और कुछ समय से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी जो है थोड़ा सा वहां प्रेशर था, स्ट्रेस था, लेकिन अब वो प्रेशर ईज होता हुआ दिख रहा है. अगर एफएमसीजी सेक्टर का भी अगर हम डिमांड देखते हैं तो उनसे भी ये पता चल रहा है, उनके जो आंकड़े आ रहे हैं कि रूरल में जो स्ट्रेस था वो कम हो रहा है. तो टू व्हीलर सेल्स हालांकि कम हुए, प्रेफरेंस जो है वो बड़ी गाड़ियों के लिए, एसयूवीज के लिए, एक चॉइस भी जो कंज्यूमर का है उसमें भी बदलाव आया है. तो ये बदलाव का भी असर जो है वो डिमांड में दिखाई दे रहा है. तो एक जो चर्न चल रहा है इंडस्ट्री में, जो ओवरऑल सेल्स में, वो पैसेंजर व्हीकल्स में आपको नजर आ रहा है. तो टू व्हीलर में आप देखिए कि ईवी की तरफ, ईवी के सेल्स काफी हो रहे हैं जहां पे सब्सिडी है और दाम जो है रीजनेबल है कंज्यूमर के लिए. तो ये जो चर्न है ये कुछ समय के लिए चलेगा, जिस तरह से शिफ्ट होगा प्रेफरेंसेस में कंज्यूमर के. Well, we have some data about EV sales now crossing 1 million in the country, which is 10 lakh units. And just coming back to inflation, because we're talking about industrial output along with the cost of doing business as well. We have RBI monetary policy data coming out saying that they expect CPI inflation to come down to 5.2% for the financial year. That's about 45 basis points lower than what has been published right now for the month of March. What are the factors that you see will lead to a fall in inflation, not a rise in inflation? See, one is definitely the base effect, which is going to show its impact. The other is, if we get a normal monsoon, and all indications are that we will get a normal monsoon. So in terms of farm sector output, that will definitely have an easing effect. Crude prices have remained stable. If we do, and it looks like they will continue to remain at this level, which is a comfortable level for India. So unless, there is some other crisis which we see building up at the global level which could impact us, the overall assessment is that inflation is definitely moving towards easing. 6.5% is the repo rate, which was left unchanged in the last monetary policy meeting that you mentioned as well. If there is a reduction in the inflation figures, not by much, by about 50 basis points, how do you see the RBI reacting to that and bringing down the repo rate instead of pushing it up? So if you see Governor Das, in his press conference, he said this should be taken as a pause and not pivot. So definitely the indication is they would be monitoring the data very closely, and they have said in the past that any decision by RBI would be data driven. So if all indicators are, and RBI monitors very different kinds of data from various sources, I'm sure they would also look at, the reduction could begin in say 2 or 3 months time when they review the data. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत में सुधार की गति निरंतर जारी है, जिससे देश में निवेश और सहयोग के पर्याप्त अवसर सृजित होते हैं. वाशिंगटन डीसी में एक गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि सरकार अपने सुधार एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था बनाना है। बहुपक्षीय एजेंसियों की बैठकों से इतर फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स तथा उद्योग परिसंघ, फिक्की और अमेरिका भारत कार्यनीतिक भागीदारी फोरम द्वारा आयोजित भारतीय दशक में निवेश पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वित्त मंत्री वर्तमान में G20 बैठकों के अलावा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका में है। जब से ये सरकार आई है तब से लगातार कारोबार बढ़ाने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं और वित्त मंत्री भी कह रही हैं कि सुधार की गति निरंतर जारी है। अब जहां हम खड़े हैं वहां से किन क्षेत्रों में और कहां-कहां सुधार की आवश्यकता आपको दिख रही है, जिस पर काम करने से जो अभी की वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसमें आर्थिक गति धीमी पड़ती दिख रही है पूरी दुनिया की, उसमें हमारे लिए लाभप्रदता के अवसर निकल कर आएंगे? देखिए, बहुत सारे हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ले लीजिए या आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट ले लीजिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ले लीजिए। बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री और बिजनेस से बातचीत करेंगे तो वो अब भी ये कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में और कदम उठाने की जरूरत है। सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है राज्य स्तर भी नहीं, जिला स्तर पर अगर कोई निवेशक निवेश करना चाहता है तो उसके लिए और क्या आसान किया जा सकता है, और ये हर क्षेत्र की बात है। अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है या अगर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना है तो उसको और कितना आसान बनाया जा सकता है, इसी दिशा में और काम किया जाएगा। लेबर लॉज जो हैं, सरकार नए लेबर कोड्स लेकर आई थी, वो अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है राज्य स्तर पर होना है। तो राज्यों को भी जो केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे जो मेजर्स लिए गए हैं उनको भी भागीदार बनकर उन सारे मेजर्स को लास्ट माइल तक ले जाना होगा, तभी निवेशकों के लिए बिजनेस और इंडस्ट्री लगाना, बिजनेस करना आसान होगा और उसका फायदा ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी मिलेगा। Deepshika, how do you see the COVID-19 risk now that the government has already overcome the pandemic risk, but rising cases, how do you see that affecting the economy? See, if you see the number of cases, look at the rise in number of cases, definitely, it concerns everyone because we've seen a very bad patch when the pandemic really hit us. But one good thing and one very positive measure which the government took at that time was getting the entire population vaccinated. That has helped, and we have seen that the virus is actually becoming endemic. The infection duration has shortened, the impact has shortened, and that is leading to very low pressure in hospital. If you see the impact on the hospital beds, there isn't much impact there in terms of occupancy levels. So in that sense, I think, it is now possibly like another infection, which probably experts can elaborate more upon that. But in terms of economic impact, I do not see any kind of, very tangible impact the virus could have. आइए चलें अब खबरों को विस्तार देते हुए शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां लगातार 8वें सत्र में आज लिवाली की गई। सेंसेक्स 60,400 के नजदीक बंद हुआ, निफ्टी 17,800 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिला जुला संकेत दिखा, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक बढ़त में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 235 अंक यानी 0.39% की बढ़त लेकर 60,393 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक यानी 0.51% बढ़कर 17,812 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझौली
कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.57% की और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.41% की वृद्धि हुई। Key domestic share indices today ended with modest gains, rising for the 8th session in a row. The BSE Sensex closed near 60,400 points, while NSE Nifty settled above 17,800 level. Both benchmark indices gained amid mixed global cues. Sensex rose by 235 points, or 0.39%, to finish at 60,393, while Nifty at the NSE gained 90 points, or 0.51%, to settle at 17,812. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended 0.57% up, and the small-cap index surged 0.41%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 17 firms rose, while 13 fell. Infosys gained 1.5%, Tata Motors climbed 1.4%, and HDFC Bank added 1.3%. On the other hand, Power Grid declined 1.6%, Nestle India slipped 1.3%, and NTPC fell 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors logged gains, while 6 witnessed losses. Healthcare surged 2.2%, IT gained 1%, and auto sector rose 0.9%. On the other side, utilities sector declined 1%, power index fell 0.8%, and FMCG was down 0.4%. The overall market breadth was positive as shares of 2,067 companies rose, while those of 1,435 companies fell. A total of 113 companies remain unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.11% मजबूत होकर 102.09 पर चल रहा था। दीपशिखा जी, बाजार में पिछले 8 सत्रों से लगातार हम तेजी देख रहे हैं। आज भी थोड़ी सी बढ़त हुई है बाजार में। आज की तेजी के पीछे मुख्य कारक क्या सब रहे? देखिए, बाजार में हम देख रहे हैं कि आजकल जो विश्व में हो रहा है, विश्व के बाजार में, उसका असर हमें सीधा दिखता है हमारे लोकल डोमेस्टिक मार्केट में। और पिछले कुछ सत्रों से जो नजर आ रहा है कि जो एक क्राइसिस था जो अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग सेक्टर की तरफ आया था, और अब ये इंडिकेशन है, चूंकि ये क्राइसिस हुआ था, अब वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ब्याज दरों में उतनी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। शायद हो सकता है वहां पर भी पॉज आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट्स जो है इसको एक बहुत बड़ा रिलीफ समझ रहे हैं, और उम्मीद करें कि अब जो है मार्केट नॉर्मलाइजेशन की तरफ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और हो सकता है कि महंगाई दर जो है वहां पर भी थोड़ी कम ही रहे, कंटेन रहे। तो उसका असर हम डोमेस्टिक क्षेत्रों में देख रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा लोकल डेटा है, आप देखिए आईआईपी देखें या इन्फ्लेशन का भी डेटा देखें, तो अब आरबीआई ने पॉज कर दिया है, और अगर इस तरह का डेटा चलता रहता है तो आशा जो है मार्केट की बिल्कुल ऑप्टिमिज्म जो है वो भरा हुआ है कि ब्याज दरों में हो सकता है 2 महीने में कटौती होना शुरू हो जाए। We've also seen in the US, the Fed Reserve was into the bond buying program of companies. 1/4 of the bonds were guaranteed purchase by the Federal Reserve, which created so much liquidity. So if it's not just the discount rate or the repo rate, it is also the liquidity that they have created. Has that returned to the market, or is it just a story of whether the repo rate or the discount rate is paused or would be increased? That liquidity, I don't think, has returned to the market as yet. You know, this is, I think, a large-scale optimism which is building into the markets again, that, inflation rates may be slightly tempered and the interest rate increases that was expected may not happen. Basically, it is the crisis or a very sharper and very high rate that was sort of building up. That stress seems to be easing a bit on markets. So which I think is impacting and which is showing in other markets as well. So TCS results have come out. The IT index went up by 1%. How do you see trade tomorrow? I think the results, although lower than market expectations, but I think the overall sense is that since the
things are normalizing in the advanced economies, particularly the US economy, looks like normalizing. That expectation is building up, and possibly IT sector may do better than, all the apprehensions that were being expected. There could be slight improvement in that sentiment. So definitely it looks like, it could be a positive move tomorrow. TCS reported a revenue growth of 1.6% in the fourth and last quarter of 2022-23 fiscal. It stood at 59,162 crore rupees. Operating profit or EBIT increased by 1.4% sequentially to 14,448 crore rupees. Net profit for the fourth quarter stood at 11,392 crore rupees. आइए चलें वैश्विक बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर मिलाजुला असर दिखा है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% लाभ के साथ बंद हुए। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की गिरावट हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% लुढ़क गया। यूरोपीय जोन की ओर चले तो समाचार तैयार की जाने तक लिवाली थी, लेकिन सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6% लाभ में था। फ्रांस के CAC 40 में 0.4% और जर्मनी के डेक्स में 0.2% की वृद्धि बनी हुई थी। Moving on to the US stock market, Wall Street stocks ended mixed yesterday as investors awaited a crucial inflation data and the unofficial kickoff of the first quarter reporting season. The Dow Jones Industrial Average gained 0.3%, the Nasdaq Composite Index fell 0.4%, while the S&P 500 ended flat. Briefly, what's your take on their earnings season and inflation? See, the earnings season would have quite an impact. They've had very rough quarter in that sense because there were a lot of events. There was interest rate tightening by the US Fed. The inflation numbers were obviously a concern there. And then you had a crisis in the IT sector and the startup economy because a bank which financed the sector collapsed. So there could be some pressure which could be seen in this quarter on the earnings. But overall, if you ask about markets, I think markets are sort of booming with that optimism and we're seeing those signals building up that, Fed may not go in for a very sharp increase now. Let's have a look at the oil market now. Oil prices today remain steady in intraday trade. Brent crude was trading at around $85.60 per barrel. West Texas Intermediate WTI crude was trading at $81.45 per barrel when reports last came in. We're seeing a spike in global crude prices primarily because of what OPEC Plus is doing by reducing production. Do you see the prices heading further upward, and what range is it going to be? I think everyone's talking about crude remaining at this level, moving within, $5 to $10 band kind of a thing. Unless OPEC goes in for very sharp cuts or there is a crisis building up, the conflict is not yet over or something new sort of develops. So it is predicted that it could remain at the stable levels of within this band. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 125 रुपए बढ़त के साथ 60,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 375 रुपए चमक के साथ 74,415 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो अंतर्देशीय कारोबार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत होकर $2,023.20 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी मजबूती के साथ $25.30 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से दीपशिखा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Retail inflation eases to 5.66% in March this year, mainly due to a fall in food and fuel prices. Industrial output rises 5.6% in February. Key domestic stocks log gains for the 8th session in a row. Sensex closes near 60,400 points. Nifty settles above 17,800 level. And TCS announces a net profit of 11,392 crore rupees for the fourth quarter of 2022-23 fiscal.
And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.